everyone, this is Preeti Ghosh and welcome back to my YouTube channel which is all about lifestyle and education. And here I am with another video regarding easy explanation of your textbooks. And if you haven't subscribed to my channel yet, do subscribe it right now and stay tuned. So why wait? Let's get started. Hello students, so today we are going to start a new chapter, that is components of food. So this is part 1 of chapter 2. So let us first see what we are going to learn today in this video. So today we are going to learn about food and nutrition. Then we are going to learn about nutrients. And then different components of food and their taste, कि वो जो component है वो हमारे food में present है कि नहीं, उनके taste. ठीक है? So let us start with today's video. Let us first deal with food and nutrition. So in very simple language, if you say, what is food? Food is what people and animals eat to survive. So food क्या है? सिंपली वो चीज़ जो एनिमल्स एंड पीपल खाते हैं लिव करने के लिए, दैट इज टू सर्वाइव करने के लिए. ठीक है. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ. सो न्यूट्रिशन वो चीज़ है जिससे हमें गुड हेल्थ और ग्रोथ मिलता है बाय eating or obtaining those necessary food. ठीक है. So now let us see what are the functions of food. ठीक है. So the first function says it provides us energy to maintain body temperature and to do work. ठीक है. So ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, प्लस हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डज फूड डू? इट हेल्प्स अस इन रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज. ये जब हमें कोई चोट लगती है, व्हेन वी गेट हर्ट, सो दैट प्लेस विल गेट वुंडेड फास्ट. ठीक है. दैट वुंड विल गेट रिकवर्ड फास्ट. तो फॉर दैट रिकवरी वी नीड टू गेट न्यू सेल्स एंड टिश्यूज. सो फूड हेल्प अस इन रिपेयरिंग और replacing the damaged cells and tissues. So food क्या करता है? वो पुराने और damaged cells और tissues को replace कर देता है. Then it makes new materials necessary for growth and reproduction. And finally it keeps us और the body healthy. वो हमें healthy रखता है और हमारी growth और reproduction के लिए proper material provide करता है. So these were all about function of food. So by now we got to know about food. Now we know that from food we are getting nutrition. Food से हमें क्या मिल रहा है? Nutrition मिल रहा है, right? Now this term nutrition has come from nutrients. ठीक है. So ये nutritions actually कहाँ से मिला है? Nutrients से word आया. ठीक है. Now what are nutrients? So nutrients are nothing but components of food. जो चीज़ें हमारे फूड में रहती हैं उन्हीं को हम कहते हैं nutrients. Now what are these components of food? Components of foods are these: carbohydrates, fats, protein, vitamin, minerals, water. These are the components of food which actually contributes to nutrients, and nutrients contributes to nutrition, and we get nutrition from food. Okay. So let us first see carbohydrates. Okay. So carbohydrates are the compounds made of carbon, hydrogen and oxygen. These are elements that made up the carbohydrates. What are these elements? Carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Now carbohydrates are the main and the cheapest source for energy for our body.
ठीक है. Therefore carbohydrates are called energy giving foods. Okay, so what are called energy giving foods? Which component of food is called energy giving food? The answer will be carbohydrates. Now let us see few examples or few source of carbohydrates. So as you can see in the picture, there is banana, then potato, maize. These are few sources of carbohydrates. Now there are three types of carbohydrates: sugar, starch and cellulose. Now what are the sources of sugar? It can be cane sugar, milk, grapes, banana, etc. Then moving on to starch, it can be rice, maize, potatoes. Then cellulose. Cellulose is a complex carbohydrate. It is a tasteless white powdery material. Okay, so cellulose is present in plant cell wall, wood, etc. Now if you talk about sugar, we talked about their sources. Now what is sugar? Sugars are the simple carbohydrates having sweet taste. And starch is a complex carbohydrate and is tasteless, odorless white substance. मतलब starch का कोई taste नहीं होता, कोई smell नहीं होता, and it's a white substance. And cellulose we just talk about, it is a white powdery material. Okay, so these were the three types of carbohydrates. Okay, now moving on to test for carbohydrates. To test for the presence of starch, a carbohydrate in food material, what you have to do? You have to take a piece of food and crush it with a small quantity of water. Boil it for a minute and then cool. तो आप हमें क्या करना है? हमें एक फूड मटेरियल लेना है, उसको वाटर में क्रश करना है, मतलब एकदम स्मैश कर देना है और उसको बॉयल करके ठंडा करना है. नाउ उस बॉइल्ड फूड सैंपल में what you have to do is add few drops of dilute iodine solution. Now if a deep color, blue color appears in the solution, then the food contains starch. And if it does not contains or it does not appear blue in color, then the food does not contain starch. ठीक है? So this was the test for the presence of starch. Now to test for the presence of sugar in a food. Sugar is also a type of carbohydrate. So what you have to do is crush the given food and extract it with 1 to 2 ml of water to it. Then add 2 to 3 drops of Benedict solution and heat. So इसमें भी फूड को लेना है, उसको क्रश करके वाटर में डालना है and this time you have to add Benedict solution. ठीक है? Now if red precipitate color is obtained, then the food item contains sugar. As you can see in the image, if it appears to be red in color or a red precipitate is obtained, then it contains sugar. Otherwise it does not contain sugar. Okay, so this was the test for carbohydrates. Okay, moving on to fats. Fats को energy bank consider किया जाता है. Why? Because our body stores the excess energy in the form of fat. Now this stored fat is used by the body for producing energy as and when required. जब भी हमें एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी हमारी बॉडी में जो कि फैट के फॉर्म में स्टोर्ड होती है वो हमें वहाँ से एनर्जी मिल जाएगी. इसीलिए फैट को दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी. Now how is fat helpful for our body? A small quantity of fat deposit in our body, it should be our, okay, in our body provides cushion to body organs and protect them from injury. ठीक है? Fat on our body also prevents heat loss from the body surface. ठीक है? सो क्या क्या हेल्प करता है? वो हमारे ऑर्गन्स को एक कुशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एंड फैट्स क्या करता है? हीट लॉस को प्रिवेंट करता है. ठीक है? बट टू मच फैट डिपोजिशन इन आवर बॉडी लीड्स टू ओबेसिटी. सो अगर फैट्स ज़्यादा हो जाए बॉडी के लिए तो दैट इज़ नॉट हार्मफुल, दैट इज़
इंस्टेड हार्मफुल, सो वो ओबेसिटी की सिचुएशन क्रिएट कर देता है. नाउ फैट्स आर essential for the absorption of vitamin A, D, E and K in the body. So this is also a crucial point about fat. Now let us see the examples or the source of fat. So as you can see in the image, these are the few sources of fats, that is egg, milk, okay, nuts. These are the few sources of fats. Now what you have to do to test for the presence of fat in food sample? Place some crushed pieces of food sample on a piece of white paper and rub it on the paper. If white paper turns translucent or oily, then the food material contains fat. ठीक है. सो क्या करना है, हमें फूड के कुछ सैम्पल्स लेने हैं, उसको पेपर के ऊपर रखना है. ठीक है. नाउ इफ द पेपर टर्न्स ऑयली और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीन नाउ यू कैन सी स्लाइटली थ्रू द पेपर. ठीक है. वैसा सिचुएशन अगर क्रिएट होता है देन दैट फूड सैंपल कंटेन्स फैट. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर component of food, that is protein. A protein molecule is made up of a large number of smaller molecules called amino acids. So protein molecule actually किस चीज से बने होते हैं? They are made up of amino acids. Okay. Now as carbohydrates are called energy giving food, fats are called energy bank, proteins are called body building foods. Okay. Now how does protein help? Protein helps in digestion, body growth, tissue repair and catalyzing certain biochemical process. Catalyzing means for the process to occur, मतलब कुछ बॉडी में जो बायोकेमिकल मीन्स जो बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उस रिएक्शंस को करवाने के लिए वो उस प्रोसेस में हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करता है. Okay. Now who needs more protein? So the growing children and pregnant women need more protein. Why? When the body is building new tissues, more proteins are required. That is why growing children and pregnant women need more protein. Now blood contains a protein called hemoglobin. What is the function of hemoglobin? It carries oxygen from the lungs to the cell and carbon dioxide from the cells to the lungs. So वो ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसको सेल्स से लेके लंग्स तक पहुंचाता है ताकि हम उसको बाद में एक्सेल आउट कर सकें. ओके. Here are few sources of protein like tur dal, soybean, beans. These are some plant sources of protein. Now some animal sources of proteins will be meat, paneer, egg, milk. These are some of the animal sources of protein. Now let us see test for proteins. To test for protein in a food sample, what you have to do is take a small quantity of a given food sample and crush it. Now transfer about 1 gram of crushed food to a test tube and add a few drops of concentrated nitric acid to it. Now warm it on a low flame and note the color of the फूड सैंपल. सो पहले एक फूड सैंपल को लेना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैंपल लेना है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देना है. नाउ यू हैव टू वार्म इट. ठीक है, गर्म करेंगे. नाउ यू हैव टू लुक आफ्टर द कलर ऑफ दैट फूड सैंपल. इफ इट टर्न्स येलो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड. ठीक है, अगर येलो टर्न आउट करता है देन प्रोटीन है. नाउ pour away the nitric acid and wash the foodstuff with water. Add ammonium hydroxide to it. If the color changes from yellow to deep orange, then the presence of protein is confirmed. So पहला जो हमने किया, पहले जो हमने नाइट्रिक एसिड डाला और हमारा कलर येलो आया, मतलब प्रोटीन है. ओके, बट उसके बाद हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड को हटा के फूड जो पार्टिकल हमने लिया था उसको वाटर से वॉश करने के बाद उसमें
एमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। अगर उसके बाद वो कलर येलो से डीप ऑरेंज हो गया तो इट इज कंफर्म्ड दैट उस खाने में प्रोटीन है। सो दिस वाज द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ओके, so students, we learnt about carbohydrate, fats and proteins and their test. So I will keep this video, part 1 video, up to this. We will discuss the other components of food in our next video. So stay tuned and thank you.